Chiropractic adjustments are no more effective than faith healing. They are both completely non-scientific and don't have a shred of evidence to back them up. Chiropractic adjustments have been debunked by many scientific papers and by many content creators already, and it is nothing but a cesspool of degenerate content. What the fuck is going on here? ऐसी बहुत सी कंडीशंस हैं जो एक्चुअली प्रॉब्लमैटिक नहीं होती, जो कोई भी पेन या डिस्कम्फर्ट का डायरेक्ट रीजन नहीं होती, बट बिकॉज ऑफ आउटडेटेड बिलीव्स एंड अ लैक ऑफ नॉलेज, फिजियोज बेस देयर एंटायर ट्रीटमेंट प्लान ऑन फिक्सिंग और अनडूइंग दोज कंडीशंस जिन्हें एक्चुअली चेंज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, एंड उन्हें चेंज करने से पेन चले जाएगा उसकी कोई गारंटी भी नहीं है. बट इट इज क्लेम्ड दैट थेरेपिस्ट पेशेंट्स की बॉडी को फील करके स्टिफ या ओवरली लूज मसल्स एंड जॉइंट्स को ढूंढते हैं एंड देन ऐसी टेक्निक्स यूज करते हैं जिससे वो पेशेंट्स के बॉडी का स्केलेटल अलाइनमेंट या मसल नॉट्स को फिक्स कर देता है. ऐसे सब पार्ट ट्रीटमेंट से ऐसा नहीं दैट यू वोंट सी एनी बेनिफिट्स एट ऑल. दे डू प्रोवाइड सम बूस्ट इन रिकवरी, बट मेजॉरिटी ऑफ इट कम्स फ्रॉम द पावर ऑफ प्लेसिबो. एंड पावर ऑफ प्लेसिबो से ठीक होने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती इफ एक्चुअल एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट्स एग्जिस्ट ही नहीं करता. बट रियल एंड रिलायबल ट्रीटमेंट्स के एग्जिस्ट करने के बावजूद भी opting to give patients placebo treatments is ethically questionable. Pushing, twisting or rubbing someone's body may make them feel good for a while, but delivering just good feelings isn't the same as delivering an actual treatment. The evidence is crystal clear. Human body ऐसे काम नहीं करती. The idea that कोई इंसान अपने bare hand से joints को twist and pull करके spine या joints को realign कर सकता है sounds more like cartoon physics than actual human physiology. And no, quickly doing some strength training right after the realignment session doesn't magically solidify that change. But you might wonder then कि manual therapy से temporary relief भी कैसे मिल सकता है if it's so non-scientific. The truth is that we Homo sapiens like to be touched. We are social animals. Compassionate, caring touch can feel incredibly relieving and calming. And ये एक anecdotal observation नहीं है. It has been confirmed by many studies that any form of compassionate, desirable touch activates our parasympathetic system, releases oxytocin, decreases cortisol, and all of this can aid in recovery to some extent, but no one's going to rehab a torn ACL just through some touching. We respond to compassionate touch irrespective of how it's done. Manual manipulations चाहे हाथ से हो या फिर कुछ tools या instruments से, किसी से भी कोई actual fix नहीं मिलता. It's not a harmful practice though, and if you enjoy being touched by professionals, you can do it to satisfy your desires. So guys, if you liked this video, please like this video. Also please subscribe to the channel, share this video with your friends, leave any comment, leave any feedback, any questions that you have, and most importantly, stay strong.